Hello everyone, this is Dr. Sunil, and in today's video we will going to discuss about the importance of early detection of oral cancer, because we are dealing with so many patients and sometimes a patient came to our clinic and said कि डॉक्टर साहब मेरे एक रिलेटिव ने दांत निकलवाया था और उसे कैंसर हो गया. सो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन इन सच अ वे कि दांत निकालते ही कैंसर हो गया. कैंसर होना काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और इसका आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है. आज के टाइम पर जब हम डॉक्टर्स को ब्लेम किया जा रहा है, मैंने काफ़ी बार देखा है कि डेंटिस्ट को ब्लेम किया जाता है कि आपने दांत निकाला इस वजह से ऐसा हो गया. मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कि उसको कैंसर हो गया या एक पेशेंट ऐसे कंप्लेन कर रहा है. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा दांत निकालने से कैंसर हो सकता है, बिकॉज आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि आप इस ब्लेम गेम से बच सकें. आपको लोग ब्लेम करने से पहले पीछे नहीं हटेंगे. सो इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इस नॉलेज को लेने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है डॉक्टर शक्ति सिंह देवरा को. मैं उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. डॉक्टर शक्ति सिंह देवरा इज़ अ हेड एंड नेक कैंसर एंड माइक्रोवैस्कुलर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन practicing at Northwest Cancer Hospital, इंस्टीट्यूट ऑफ हेड एंड नेक सर्जरी, अहमदाबाद. इनका इंट्रोडक्शन अगर मैं देने बैठा तो हो सकता है कि ये वीडियो 3-4 मिनट और लंबा हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस रहा है इंडिया, यूएसए, साथ में ये 1000+ माइक्रोवैस्कुलर सर्जरीज भी कर चुके हैं. सो इनका मेन मिशन ये है कि ये हम डेंटिस्ट को ट्रेन करना चाहते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ ओरल कैंसर के लिए, ताकि हमारी तरफ से पहली चीज़ गलतियां ना हो, सेकंड चीज़ जो पेशेंट है उसको पहले ही पता चल जाए, क्योंकि जो भी कैंसर के साइंस होते हैं वो ओरल कैविटी में सबसे पहले दिखते हैं. तो जो भी साइंस है वो हम पहले ही डिटेक्ट करके पेशेंट को अगर बता देंगे तो पेशेंट के लिए ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ट्रीटमेंट लेना, और अर्ली स्टेजेस में उसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. तो मैं ज़्यादा इस इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं खींचते हुए सीधा डॉक्टर शक्ति सिंह देवरा को इनवाइट करूंगा मेरी स्क्रीन पर और हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में. हाय. हेलो. तो गुड इवनिंग डॉक्टर शक्ति. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारे बीच, राइट. क्योंकि आप जो है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल जो कैंसर है उसके स्पेशलिस्ट हैं. तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ ताकि हमारे जो यंग डेंटिस्ट हैं या फिर जो अभी स्टडी कर रहे हैं उनको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि एग्जैक्टली कैंसर के बारे में हमें कितनी नॉलेज होनी चाहिए एज ए डेंटिस्ट. ठीक है. साथ ही साथ हमें कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए और हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट हमसे अवेयर हो. ठीक है. तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आज रेडी किए हैं आपके लिए, तो मैं लाइन से आपसे पूछता जाऊंगा ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आपसे सीखने को मिले. तो सबसे पहला जो कॉमन सवाल है, हाँ, जो मेरे माइंड में आता है हमेशा जब भी मैं क्लिनिक पे प्रैक्टिस करता हूँ, हमेशा मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर इतना कॉमन होता जा रहा है. लाइक अगर हम आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो इतना सुनने में नहीं आता था कि कैंसर है किसी को, पर आज मैं देखता हूँ कि हर अगला बंदा कहता है कि उसको कैंसर है या उसके किसी रिलेटिव को कैंसर है. तो इसका रीजन क्या है? हमारे जीन्स है या फिर हमारी लाइफस्टाइल है? पहले तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए. Okay, so to start with, first of all, I'd like to thank you for inviting me for this conversation. And definitely, I wish you everyone the National Dentist Day. And on this occasion of Dentist Day, I think it is our utmost as a professional responsibility, a moral responsibility to make people aware about the oral cancer. And more importantly, as you said, our role when it comes to the oral cancer caregivers. So now coming on to your question, that why this prevalence, or you can say the incidence, is high in today's time. Now, if you go back and go back into 90s, where they start off pan masala, especially, it has slowly increased, in the 90s, and it came to the peak level in the 90s to early 2000. And the young generation, the more importantly,
these pan masala people, the gutka, now it is called pan masala, but it was typically a gutka. The use of gutka, which started in 90s, they have targeted the youth, they have targeted the young generation. So that was one of the important factor that people started eating tobacco, started eating gutka in 90s, and now after a span of 15-20 years, now we see a lot of young people who are in 30s and 40s are reporting with the oral cancer. So in nutshell, if I want to talk about why the increasing prevalence, it is all related to the tobacco and the supari. Very important point I would like to mention here is, now in this today's time, with the so much of we fighting against this gutka owners, this big guns, what they have done is they have segregated the pan masala and they're selling the tobacco in a separate pouch, and they give a answer that now pan masala, the pan masala doesn't contain any tobacco, and tobacco only causes cancer. So this is one of the myth which these people are spreading. It is the supari also is a causative factor. The betel nut, it makes your buccal mucosa precarious for cancer. So that is the reason that we see a lot of oral submucous fibrosis when in the patients who have a habit of masala chewing or pan masala chewing. So this the increasing incidence, more common majority are related to the tobacco and its products. Secondly, yes, as you said, the lifestyle of our generation is changed. Now we have a lot of food alteration, we have a lot of habits which we have changed. So I think there are a lot other things which are coming into the play. But we have to, when we talk about the oral cancer prevention, first we have to talk about only about the majority. It is only tobacco, pan masala, supari. We should target the alcohol is also now it is one of the literature proven one of the cause for oral cancer. So we need to work on the habits, that how we can change the habits to prevent the oral cancer. So why there is late presentation of oral cancer in patients? Like काफी सारे पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया. सो थर्ड स्टेज का कैंसर एक दिन में तो नहीं होता, जितना मुझे पता है. वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पर उसको क्रॉनिक होने में टाइम लगता है. Right. तो इतना लेट क्यों पता चलता है उन लोगों को? ऐसा क्या हमारी बॉडी में होता है जिससे हमें पहले ये चीज डिटेक्ट हो जाती है? So now when we talk about the reason for late presentations, so especially in our country, Yeah. the late presentations are dedicated. There are two important aspects of late presentation. So one is the patient related factors and one is the doctor related factors. Now, patient related factors, there are a lot of the myths in the public, in the masses. There are the very important in our country is the geographical isolation. See, there is accessibility is less. Somebody who is sitting 400 kilometers away from the Ahmedabad, if he wants to reach to any doctor, he has to travel 400 kilometers. So probably there's a lack of the cancer detection centers in the rural areas. So geographical isolation plays a very important role in the late detection. Then talk about the lack of public awareness. We everyone know whosoever is gutka chewer that he's eating this gutka or bidi, he has a tendency to develop cancer, but they ignore the ignorance. That ignorance is actually killing them. Ignorance about the symptoms. Now cancer doesn't happen overnight, as you already said. Yes, it gives us precancerous lesions, then it probably convert into the cancer. Now once it get convert into the cancer also, it doesn't pain when it is a stage 1 and stage 2. This is an ulcer which is non-healing ulcer, but patient doesn't interfere with daily activity. कि मुझे काम पे जाने में दिक्कत नहीं होती, मुझे खाने में दिक्कत नहीं होती है, and if it is not paining for me, why should I take the pain? So that is the ignorance. That is the lack of public awareness about that. I eat tobacco, I might develop cancer, I should get it checked.
So next comes the doctor related factors. Now somewhere in our curriculum we also lack the identification of cancer. Sometimes a doctor is also ignorant about, especially when I talk about the general practitioners and dental surgeons. They do ignore the symptoms of cancer. Unfortunately, they do ignore. If a patient come with a pain on this tooth and a patient has ulcer on this tooth, a dentist will have, he's going to just look on the other tooth, just do the RCT, do the capping, done. If I talk about this tooth, that you have an ulcer, get a biopsy done, patient might run away. So there are a lot of things, dentist thinks in his mind कि यार मैं इसको जबरदस्ती का ज्ञान क्यों दूं? But no, that is your moral duty. That is a professional duty. So you should examine the patient as a whole. Do not just examine a teeth. I think that is what important message every dental person should understand. Examine the neck, examine the oral cavity as a whole. It just takes probably 2.5 minutes. We are definitely going to share a beautiful video on even on examination also. It just takes 2 minutes to examine a patient, then talk about whatever the patient is having a symptom. So the ignorance of doctor also should be considered, and that is the reason that we started a program to train the dental fraternity. Because I tell you, probably the 15-20 years ago, when I was a student in the dental fraternity, we used to get people who are like, कि मेरे को दांत निकालने के बाद में कैंसर हो गया है. So I used to think, यार ऐसा कैसे हो सकता है, दांत निकालने से थोड़ी कैंसर होता है. But this is what the general public thinks. This is what the perception in the community. So how this perception is developed? Now, a patient who goes to a dentist with a pain in the tooth, dentist without examining the patient, why only one tooth is mobile? He just see कि यार बहुत बढ़िया है, तो आराम से मोबाइल टीथ निकाल देते हैं. He just take out the tooth, write the medication. Patient comes after 7 days, 10 days. साहब ये दांत निकाला, घाव नहीं भर रहा है. Now dentist gets into trouble. अरे यार ये क्या हो गया, घाव क्यों नहीं भर रहा? Again he prescribes some medication. So patient is stretched for 1 month, and then dentist will say कि इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है. Then he referred the patient or ask some maxillofacial surgeon to intervene. And now what patient feels is कि मेरे को दांत निकालने से पहले सिर्फ दांत हिल रहा था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन दांत निकालने के बाद में the growth is increased, and now the cancer is developed after the extraction of tooth. Now this is the myth which people are developing. So why, now the important question is, why there's a growth after taking out the tooth? So once you take out the tooth, you violate the planes of the spread of cancer. So you create a space to develop, to get more cancer cells being divided, and it increases the growth after the extraction into the extraction socket, and that gives an impression कि मेरे को दांत निकाला है, उसके बाद कैंसर हो गया है. So very importantly, we as a dental fraternity, people should get trained into the clinical examination of oral cancer, and whenever a patient walks into a clinic, examine thoroughly. If you have any symptom, they should tell to the patient. And if a patient is having a precancer symptom, these patients should be kept under surveillance so that this patient should not develop full-fledged cancer and later report at a stage 4. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया. लेकिन अब एक डर मुझे इन सारी बातों से लग रहा है, लाइक एक डेंटिस्ट है, जैसे मैं अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को देखता हूँ, और कॉलेजेस में इतना नहीं सिखाया जाता कि कैसे कैंसर को आप पहले डिटेक्ट कर सकते हो या क्या इसके डायग्नोस्टिक मेथड होते हैं. लाइक कुछ कॉलेजेस में सिखाया जाता है. मैं सारे कॉलेजेस को तो एक तराजू पे नहीं तोल सकता, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. तो अगर मैं सीखना चाहता हूँ या मेरे जैसे और भी बहुत सारे डेंटिस्ट है, वो ये चीज सीखना चाहते हैं,
उनको ऐसा क्या करना चाहिए? लाइक आपने अभी बताया कि आपका कोई कोर्स है, क्योंकि काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर पेशेंट पहुंच ही नहीं पाता है। लाइक अब सारे पेशेंट आप तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आप उनको डिटेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं वो सेंटर्स होने चाहिए, है ना? मैं तो ये चाहता हूँ कि हर डेंटल क्लिनिक एक ऐसा ही सेंटर होना चाहिए जहां पर अर्ली डिटेक्शन हो सके, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि एक डेंटिस्ट अर्ली डिटेक्शन करने में ज्यादा एक्सपर्ट होता है, क्योंकि जो ओरल कैंसर के सिम्टम होते हैं या फिर बॉडी में कोई और कैंसर है उसके जो सिम्टम होते हैं वो ओरल कैविटी में सबसे पहले दिखते हैं। Right. तो मेरी तरह और भी जो डेंटिस्ट है वो आपसे अगर सीखना चाहें या फिर कोई ऐसा मेथड जिससे हम नॉलेज ले सके, तो प्लीज आप हमसे शेयर करिए, ताकि हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, मैं पर्सनली अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकूं, ताकि मैं उन पेशेंट्स के साथ जस्टिस कर सकूं जो मेरे तक आ रहे हैं। राइट, सो वी जब हम लोग कॉलेज में थे ना, वी देयर वाज अ सेइंग दैट माउथ इज अ मिरर ऑफ द बॉडी. A good dental surgeon, he is not the dental surgeon, he is basically the oral health physician. Now, rather than I tell a dental surgeon, if a doctor expands his horizon, I would rather term them as oral health physician. So now we talk about the lack of awareness in the dental aspects. Yes, I do agree with the fact that unfortunately the cancer is not very much stressed because exam में आता नहीं है, बहुत important नहीं होता है, and you know the college doesn't have cancer centers, so the this is not been taught in the college curriculum, but this is there in the curriculum. This is very well there in the curriculum that every dental surgeon should be taught the early detection of oral cancer. So what we have realized is I work with the Asian Cancer Foundation. So what we have done is now we wanted to train our dental fraternity because we do not want any patient walk into my clinic and says कि साहब दांत निकाला और कैंसर हो गया. Because I take that responsibility to train the dental fraternity across the country so that no dental surgeon should be, no one should point a finger at a dental surgeon कि मेरा दांत निकाला और मुझे कैंसर हो गया. So what we did, we had started one course 2 years ago. That is education for cancer, EduCan. That is education for cancer, that for specifically meant for dental professionals. We launched this program 2 years back. This program is endorsed by the Gujarat University in Ahmedabad. We started this program. That was the era of the COVID program. That was the COVID era. So we started this program as a totally online based program. So we have trained more than 500 dentists across the country via this EduCan program. So what we do in this EduCan, we had basically divided the EduCan into 3 modules. So module 1, module 2, and module 3. Module 1 is all about understanding of oral cancer. So that includes your your history taking, because history taking is very important. What medication patient is taking, do the patient have a habit of tobacco, previous habit of tobacco, right now any habit of tobacco. So because we as a dental surgeon, I said, now we are no more a dental surgeon, we are oral health physician. We should take a good history and counsel the patient. If patient is having a habit of tobacco, it is our responsibility to counsel a patient कि भाई this might land you in trouble today or tomorrow. So the DCI has come up with a curriculum on the tobacco cessation clinics at every dental college. This has been recently added, raised. This issue is raised in the DCI, and DCI come up with this curriculum. Now we want to train every dentist even for tobacco cessation. So case history taking, tobacco cessation, then comes the clinical examination. What are precancerous lesions? What are red and white lesions? How do you examine it? How do you do the examination? In examination, when I talk about examination, it is the visual examination through your palpation, through any kind of auscultation. So everything need to be considered into the clinical examination. So this is the module 1. The module 2 is all about investigation. Now, if a patient is having a ulcer in mouth, how do you investigate?
Investigation in two ways. One is by imaging and one is by histopathological. So imaging, what kind of imaging should be done? What kind of X-ray should be done? When you should do a sonography? When you should do a CT scan? When you should do an MRI? When you should do a PET scan? What are the apt imaging for apt kind of the lesion or presentation? For example, I tell you, a patient comes with ulcer on buccal mucosa. Many of our colleagues, they advise for dental scan. Now, dental scan doesn't play any role because it's dental scan is specifically meant for heart tissues. So now the patient comes when visits my clinic कि साहब मेरा सीटी स्कैन तो हो रखा है. क्या हो रखा है? तो हम देखते हैं कि अच्छा ये तो डेंटल स्कैन, ये काम का नहीं है, आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा. तो साहब मेरे को वो डेंटिस्ट सर ने मेरे को ये क्यों करवाया? Now do I have an answer? But I carry that responsibility that I need to train that dental person कि भाई do not get a dental scan for soft tissues. Then comes the investigation aspect. So what are the investigations we do? How do you do the FNAC? How do you do the biopsy? What kind of biopsy? Excisional biopsy. When you do the excisional biopsy? When not to do the excisional biopsies? That is again a very important aspect. How do you do the punch biopsies? What are the ways you can take the punch biopsy? How do you take the sample, give it to the laboratory? How do you diagnose the patient? So these all investigation aspects are comprehended in the module 2. And module 3 is all about dental oncology. Dental oncology is, as it's, we are working very hard on dental oncology, trying to develop the concept of dental oncology across the country. And with that theme, in last year, we have conducted an international conference on dental oncology at Ahmedabad also. Now, dental oncology is about how a dental person, being from the dental background, we don't have to be an MDS to do a dental oncology training. So dental oncology is all about, that is a part of dentistry which deals with the oral health of these cancer patients. So these cancer patients can be oral cancer patients, head neck cancer patients. These patients can be the general cancer patients. So what you do, what are the complications of this surgery? Like patients have the trismus, how do you manage trismus? Patient have xerostomia, how do you manage xerostomia? Patient have mobility of teeth after the surgery. So patient develop the osteoradionecrosis. So there are a lot of aspects probably we need to address after surgery also. So this is being taught in the module 3. Now the module, it's not the module, but at the end of these 3 modules, we conduct an exam because we do not want you pay and take the certificate because it's a university endorsed program. So we need to understand that whatever we want to convey to you, did you understood the concept? And if yes, they need to go through the exam. If they cross the 50% marks, then a certificate is being issued to the selected or to the past candidates. And this year now Educant 2.0 is being, we are revamping the Educant program, and this time we are adding 30 workshops across the country. Now every state is going to have a workshop center. Now you have been trained, you have been educated, you have written an exam. Now you want to understand, I want to go and see how biopsy has been taken. If somebody is from Karnataka, he has to go to the nearest center, our workshop center. He can get the training on biopsy. He can get the training on the prosthetic part, the intraoral processes, the extraoral processes, fluid applications. So all the workshop will be including all these aspects of dental oncology, and they can attend the workshop to increase the knowledge, to hands-on knowledge about the management in the dental oncology. So this is what this Educant 2.0 is all about. And the registrations are open. People can apply online. So, and if you have anything, you can just write to us. We'll definitely address any queries that there. बिल्कुल, ये आपने जो अपने मॉड्यूल्स के बारे में बताया, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये ऑफलाइन भी है. लाइक ऑनलाइन तो आप ट्रेनिंग देते ही हो, साथ के साथ ये ऑफलाइन सेंटर्स भी है जहां पर हम एक्चुअल में आकर सीख सकते हैं. लाइक कॉलेज की, हमने जो कॉलेज में नहीं सीखा है जिस चीज के बारे में, वो हम एक्चुअली में आपके पास आकर सीख सकते हैं.
आपका जो भी लिंक वगैरह होगा फॉर्म का, वो मुझे बिल्कुल आप शेयर करना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको, ताकि अगर जो ये देख रहा है कोई डेंटिस्ट है, किसी को इंटरेस्ट है आपकी इस नॉलेज को लेने के लिए, और मैं तो बिल्कुल मेरे को तो ऐसा है कि मुझे तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं एक ऐसे सेमी अर्बन एरिया में काम करता हूँ जहाँ पर बहुत ज्यादा टबैको च्यूअर्स हैं और गांव के लोग हैं, अवेयरनेस नहीं है, और हर किसी को कोई ना कोई लीजन होता ही है। और जैसा कि आपने बताया कि हम डरते हैं कि हम पेशेंट को बोलेंगे और पेशेंट चला जाएगा और हम उसको लूज कर देंगे। What we are doing is we have an interconnected program with the educand. Now, suppose you are our educand candidate, you have cleared the exam. So now, now we are going. We are going to enroll you for eCan clinics. Now, what is this eCan clinics? So, eCan clinics, we have we did a pilot project in Siroi. Now, almost we have around 50 plus eCan clinics in Rajasthan and Gujarat. So, we are going to spread this eCan clinics across the country. Those who have been trained by the Educant program, they will be enrolled into eCan clinics. So, what is this eCan? So, E stands for early detection of oral cancer. E stands for empowerment of dental professional, and E stands for E health services. Now, as you said, कि सर अभी मेरे को एक अल्सर का पेशेंट आया, मेरे को क्या जवाब देने का है, बिकॉज यू if you have educant trained, you will know what is it. Still, if you have a doubt, anytime we have a program wherein you just have to click a photo, upload on the eCan, you will get a call that what is to be done for this patient. So what you do is you will guide the patient in the right way कि साहब आपको ये हो सकता है, आप इसकी advice for biopsy, you can go to, we are going to tell you the nearest person whom you have to send, because see, we don't want a people from Rajasthan to come to Ahmedabad and get a biopsy done. So on that way we are trying to develop these 30 workshops. They will be helping you in this, the nearest workshop will be helping you. So a mentor, suppose somebody is there in Calcutta, so a patient is near around Calcutta, he wants some opinion. So now these people from near around Calcutta will be reaching out to Calcutta, to that mentor, to the doctor who is doing the workshop, so that you do a workshop there. Now he becomes the mentor for all the people in the near in the region of Calcutta. We will be the connecting dots, but ultimately you will be connected. Suppose you are practicing in Pune. Now you want somebody in Pune to come and see this patient, because I don't want this patient to travel to Ahmedabad. So now you tell a patient कि साहब आपको ये अल्सर है, इसकी बायोप्सी की जरूरत है. If you can do a biopsy, it's well and good, fine. If you have any doubt I should take an opinion from a surgical oncologist or a maxillofacial surgeon, so we will be guiding you. Please send the patient to the nearest person, so that that patient should not लीक नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ चला गया, लॉस टू फॉलो अप नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए वो. हाँ कि नो, इट्स नॉट अबाउट डाइवर्ट. दिस पेशेंट एक्चुअली दे गेट लॉस्ट, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि यार ये डॉक्टर ने मेरे को डाउट में डाल दिया है. अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है. आपने अपनी आरसीटी कंप्लीट कर दी, आपने पेशेंट को बोला कि अल्सर है, आपको इसमें कैंसर हो सकता है, ठीक है, आपने बोला कि कैंसर हो सकता है. नाउ देयर विल बी टू सिनेरियोज विल बी देयर. पहला सिनेरियो कि पेशेंट बोलेगा यार ये मेरे को वहम कर दिया, मेरे को वहम में डाल दिया. सो व्हाट ही विल डू इज he will go to some आयुर्वेदिक, some होम्योपैथिक, और वो आसपास अपने ऐसे लोगों से सलाह लेगा कि यार मेरे को यार इसमें बोलता है कैंसर है, तो बोलेगा एक काम करना है, आप आयुर्वेदिक चालू कर दे, तू उसको छेड़ाछाड़ी मत कराना, तू उसको आयुर्वेदिक चालू कर दे. नाउ दीज पीपल विल नॉट रिवर्ट बैक टू यू, एंड दे विल रीच टू द टर्शियरी सेंटर विद ए stage 4 disease. So what you have to do, you have to guide right from there कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, हो सकता है इसके अंदर कैंसर हो भी. What you do, you meet a cancer surgeon. I'll send you to the cancer surgeon, because I want that change should be complete. You refer to a cancer surgeon. Cancer surgeon does the evaluation. If needed biopsy, if needed surgery, after that again he should come to you for the follow-up. That change should get complete. It's not that you just have to diagnose a patient and then leave the patient.
कि भाई चल यार तू उसको बुला लेना. So that is where we will complete the chain. That is where our role comes. That is where we want the people who have been educated, those who underwent the education, through the Educan program. We will include them. We will incorporate them into this Econ clinic program, and will empower them. So the dentist is going to get empowered. The patient is going to get benefited. इट इज टोटली अ विन विन सिचुएशन, पेशेंट का भी फायदा, डॉक्टर का भी फायदा। और मैं समझ सकता हूँ कि कितने एफर्ट्स लगे होंगे आपको इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, आपने जो 30 सेंटर्स के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये 30 सेंटर्स तक पहुंचने के लिए बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है। डेफिनेटली आपके माइंड में कोई ना कोई बड़ा विजन तो होगा, और ये चीज आज हमें भले छोटी लग रही है, बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कुछ आने वाले सालों में ये चीज बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको हर कोई जानने लगेगा। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबको यही बोलूंगा कि अगर आप केपेबल हो कि आप ये लर्निंग कर सकते हो, तो प्लीज आप इसमें एनरोल करके लर्निंग जरूर करना, क्योंकि कुछ ना कुछ आप सीख के निकलोगे। डॉक्टर शक्ति सर की जो टीम है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपकी टीम ने मेरे से कांटेक्ट जो किया था, जब हमारी बात हुई, तो हर कोई एक्टिव है आपकी टीम में, सारे पार्टिसिपेंट्स एक्टिव हैं आपकी टीम के, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पे अच्छा काम कर रहा है। आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, ताकि एक तो मैंने बहुत नॉलेज ली आपसे, थैंक यू, साथ में जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज गेन करी आपसे। थैंक यू सो मच। एनी लास्ट वर्ड्स अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे? Before we log out, yes, as you said, we have a big vision, and this Educant program is not only limited to our country. We are expanding this program to all the Asian countries, wherein we are already opened our applications to Bangladesh, Pakistan, to Sri Lanka, the all Asian countries. The dentists from all these Asian countries will be trained under this program.